Hello, everyone. Yes, friends, we are live and going on continuously with the empowering of subconscious mind. Yes, subconscious mind. We always tell that subconscious mind is the power. It is that power which is giving us life, which is giving us everything, whatever we desire, whatever we think of, whatever is our goal, anything we can get if we are empowering our subconscious mind on a daily basis. Friends, this is a very fantastic book which I am reading, and it is giving lot of changes to many people in their life, and hence I want you all also to change who are listening to me on live, or if they are listening my recording, then also you see that if you have this book, read it 2 times, 3 times, 4 times in your life and see that how the changes occur. Follow it. Just reading will not solve any problem. You have to follow those techniques, and you have to see that yes, how it works, how is the working of this takes place. Okay, we were studying, or we were reading the affirmative method. So many methods we are रीडिंग हियर. इतने सारे मेथड कल भी हम लोगों ने देखे. कल के जो मेथड थे वो था द स्लीपिंग टेक्निक, द थैंक यू टेक्निक, जो हमने देखा कि बहुत पावरफुल है. थैंक यू टेक्निक भी बहुत पावरफुली काम करता है. दिस आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस्ड दैट हाउ थैंक यू टेक्निक वर्क्स. And all these things, whatever is happening, that is, always be thankful to it. है ना? Whatever I am getting, we always blame about what we don't have. हम लोग हमेशा वही चीजें देखते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, या हमारे पास जो भी कमी है वो हमको दिखाई देती है, लेकिन जो है उसको हमने कभी देखा नहीं कि हमारे पास कितनी चीजें हैं जो शायद और किसी के पास नहीं है, और इस चीज के लिए भी लोग तरस रहे हैं. तो क्यों ना उसको थैंक यू बोला जाए, उस चीज के लिए थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस माना जाए. तो अगर हम ऐसा भी करते हैं, और कई बार ऐसा भी किया जा सकता है कि आप जो चीज पाना चाहते हैं उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोल दीजिए. गॉड को, यूनिवर्स को, नेचर को, एनीवन, यू जस्ट गिव थैंक यू टू फॉर दैट पर्पस ऑल्सो व्हाट यू डोंट हैव, उसके लिए भी थैंक यू बोलते जाइए. यस, so you see how universe starts following some such things that will also come in your lap. वो भी आपके पास इतनी जल्दी आ जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा. So friends, we will start with the affirmative method. Yesterday there was little problem with my computer, and suddenly it went off. So in between we were just listening to the story several times a day, how the affirmative story has changed one lady's life. That was been taught in the yesterday's lesson. जब हम पढ़ रहे थे तो हम यही चीज सुन रहे थे, और एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगी. Several times a day, I withdrew all thought from the contemplation of my sister's symptoms and from the corporeal personality altogether. Calmly, confidently, I affirmed as follows. ये जो स्टोरी सुना रहे हैं, उनकी सिस्टर कैथरीन, वो कहीं बीमार थी और उनका ऑपरेशन होने वाला था. उस ऑपरेशन में जब वो जाने वाली थी तो उन्होंने अपनी सिस्टर से ये रिक्वेस्ट किया कि प्लीज प्रे फॉर मी. तो ये सिस्टर अराउंड 6000 माइल्स दूर है, फिर भी इनकी प्रेयर्स कैसे काम आती है, कैसे हम किसी और के लिए भी प्रे कर सकते हैं और वो प्रेयर्स भी अफर्म होती हैं. तो वो वर्डिंग्स जो है, वो क्या प्रेयर के वर्डिंग्स थे वो सिस्टर के लिए, वही वो इस पैराग्राफ में बता रही हैं. दिस प्रेयर इज फॉर माय सिस्टर कैथरीन. शी इज रिलैक्स्ड एंड एट पीस, poised, balanced, serene, and calm. The healing intelligence of her subconscious mind that created her body is now transforming every cell, nerve, tissue, muscle, and bone of her being according to the perfect pattern of all organs lodged in her subconscious mind. See, friends, how
शी इज टेलिंग दैट ऑल हर सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज, एवरीथिंग इज वेरी फाइन। तो हमको यही फॉलो करना है, यही टेक्निक फॉलो करनी है। जब भी हम बीमार हैं या हमको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमको क्या सोचना है कि हमारे सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अवर ऑल दी ऑर्गन्स आर परफेक्टली ऑल राइट, मेरे सारे सेल्स, टिश्यूज वो मेरा कहना मानते हैं, मुझसे बात करते हैं वो, और हम पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहे हैं। तो आप देखिए धीरे धीरे कैसे आपके शरीर में बदलाव आने लगेगा और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, जिस प्रॉब्लम से भी आप गुजर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है। वही सेम चीज उन्होंने प्रेयर में अपने सिस्टर के लिए कही कि शी इज फीलिंग वेरी काम, वेरी क्वाइट, वेरी बैलेंस्ड, वेरी मच अवे फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, ऑल द सेल्स आर वर्किंग प्रॉपरली। वही वो रिपीट कर रही थी अपने प्रेयर में। Silently, quietly, all distorted thought patterns in her subconscious mind are removed and dissolved, and the vitality, wholeness, and beauty of the life principle are made manifest in every atom of her being. She is now open and receptive to the healing currents that are flowing through her like a river, restoring her to perfect health, harmony, and peace. All distortions and ugly images are now washed away by the infinite ocean of love and peace flowing through her. And it is so. So, have you understood this? That how this happens? Yes, whenever we are praying for someone else, पहले तो उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में कोई डर नहीं रह गया है, विदाउट फियर, विदाउट वरी, विदाउट डाउट। फर्स्ट वी विल प्रे फॉर दैट सबकॉन्शियस माइंड किया, उनका भी सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से, द माइंड इज एट पीस, हार्मनी, ऐसा हम पहले वो चीज प्रे कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उनके जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बोलेंगे। तो क्या होगा, उनका माइंड और हमारा माइंड विल बी एट अ सेम लेवल ऑफ कनेक्शन, and automatically the prayers which I am doing from here will be reaching that person. So this is the way how we can pray for someone, or we can affirm some positive words for someone who is away from us, who is not here. आप अपने relatives, friends, neighbors, किसी के लिए भी ये prayers कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स, कोई भी फैमिली मेंबर्स भी कई बार बीमार होते हैं, हम हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते हैं, हम दूर हैं उनसे, तो उस समय पे भी हम ये सारी प्रेयर्स कर सकते हैं। At the end of 2 weeks, my sister had another examination. Her x-rays were negative. Her doctor admitted that she showed a remarkable healing and called off the scheduled surgery. तो आप सोचिए, बिना सर्जरी के उन 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, जब ये प्रेयर्स ये सिस्टर कर रही थी, उनकी सिस्टर, और उन्होंने देखा कि उनकी जो यंगर सिस्टर है वो पूरी तरह से, जब उनका एग्जामिनेशन हुआ तो पूरी तरह से ठीक हो गई है, सारे जो रिपोर्ट्स थे वो नेगेटिव हो गए। अब जो डॉक्टर ने सर्जरी प्रिस्क्राइब की थी कि उनकी सर्जरी होने वाली है, वो सर्जरी भी करने की जरूरत नहीं है, इतना फायदा हो गया उनको। टू अफर्म इज टू स्टेट दैट इट इज सो। अफर्म करना मतलब हम इस तरह से बोल रहे हैं कि वो वैसा ही है, ऐसा ही उनके साथ है, उनकी बॉडी वैसी है, उनका स्ट्रक्चर वैसा है, उनके ऑर्गन्स वैसे हैं, तो हम उसको बोलते हैं अफर्मेशंस। As you maintain this attitude of mind as true, regardless of all evidence to the contrary, you will receive an answer to your prayer. Your thought can only affirm, for even if you deny something, you are actually affirming the presence of what you deny. Repeating an affirmation, knowing what you are saying and why you are saying it, leads the mind to that state of consciousness where it accepts that which you state as true. Keep on affirming the truths of life until you get the subconscious reaction that satisfies. That means what is being told here, that आप continuously affirm करते रहिए जब तक आपको वो result मिल नहीं जाता है। रोज आप सुबह और शाम, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद आप इस चीज को रिपीट कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी जिंदगी में बदलाव आते जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज देखनी है कि यस, देयर इज सम पावर इन अफर्मेशन टेक्निक ऑल्सो। और एक टेक्निक बता रहे हैं हमको ऑथर यहाँ पर, दैट इज डॉक्टर जोसेफ मर्फी। हमेशा हमसे कहते रहते हैं अलग अलग टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम अपने को हील कर सकते हैं, या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से हम बहुत सारी चीजें पा सकते हैं, बहुत सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो उसमें और एक टेक्निक कौन सी है, द आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड। हम बहुत बार आर्ग्यूमेंट करते हैं ना,
कई बार हमको कोई चीज सामने वाले की पसंद नहीं आ रही है, बहुत कुछ कोई बता रहा है हमको या बोल रहा है, तो हमारा और आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है उनसे। तो ये आर्ग्यूमेंट से भी किस तरह से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं वो हम देखेंगे। दिस मेथड इज जस्ट व्हाट इट्स नेम implies. It stems from the amazing work of Dr. Phineas Parkhurst Quimby, a pioneer in mental and spiritual healing, who lived and practiced in Belfast, Maine, over a century ago. He was really the father of psychosomatic medicine and the first psychoanalyst. This person has described this technique. He was the psychosomatic in medicine, father of psychosomatic, and even called as psychoanalyst. He also had a remarkable capacity to diagnose clair, clairvoyantly clairvoyantly the cause of the patient's trouble, pains, and aches. Matlab, he was having that power. In brief, the argumentative method, as employed so successfully by Quimby, consists of spiritual reasoning. You convince the patient and yourself that the sickness is due to false beliefs, groundless fears, and negative patterns lodged in the subconscious mind. You reason it out clearly in your mind and convince your patient that the disease or ailment is due only to a distorted, twisted pattern of thought that has taken form in the body. This wrong belief in some external power and external causes has now externalized itself as sickness and can be changed by changing the thought patterns. मतलब ये जो बीमारियां हमको होती हैं वो किसके कारण होती है? कहीं ना कहीं हमारे जो रॉन्ग और निगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में बैठ गए हैं, बिलीफ्स जो हमारी माइंड में पूरी तरह से बैठ के अपना घर जो है वो जमा लिया है उन्होंने, कि वो अपना घर बना लिया है उसके उस माइंड में, क्योंकि वो माइंड तो एक प्लेटफॉर्म है हमारा, और उसके उसमें अगर वो रह रहे हैं तो वो हमको हिलने नहीं देंगे उस बिलीफ से। तो हम अगर इस थॉट पैटर्न को चेंज कर देते तो हम बहुत सारी बीमारियों से बाहर आ सकते हैं, जबकि हम बीमार इसी वजह से हैं क्योंकि हमारे थॉट्स उस तरह के चल रहे हैं। तो हमको पहले ये चेक करना है कि हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह के हमारे थॉट हैं, इसलिए हम सिकनेस की तरफ क्यों जा रहे हैं। सिकनेस होना ही नहीं चाहिए किसी को भी। जब हमारे थॉट बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत एनर्जेटिक है, तो सिकनेस कहीं भी किसी भी तरह से हो नहीं सकता। You explain to the sick person that the basis of all healing is a change of belief. You also point out that the subconscious mind created the body and all its organs, therefore it knows how to heal it, how to heal it and can heal it, and is doing so now as you speak. You argue in the courtroom of your mind that the disease is as a shadow of the mind, based on disease-soaked, morbid thought imagery. You continue to build up all the evidence you can muster on behalf of the healing power within, which created all the organs in the first place and which has a perfect pattern of every cell, nerve, and tissue within it. Then you render a verdict in the courthouse of your mind in favor of yourself and your patient. You liberate the sick one by faith and spiritual understanding. हम कैसे किसी को ठीक कर सकते हैं? By telling that person that you are not believing on something which is required. You are believing wrong things. You are believing negative things. That is why your body is feeling sick or you are feeling the sickness. तो आप कैसे किसी को बता सकते हैं? पहले तो आप उसके थॉट पैटर्न को चेक करेंगे कि क्या माइंड में चल रहा है। जैसे ही उस माइंड में ये पता चल जाए कि वो थॉट्स गलत हैं, वो थॉट्स कुछ अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ही वो थॉट्स चेंज हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो बॉडी है, इट इज ऑल मेड अप ऑफ दिस सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ने ये बॉडी बनाए हैं, ये ऑर्गन्स बनाए हैं, तो उसको पता है कैसे हील करना है। अगर मैं उस तरह के थॉट उसमें डालना शुरू कर दूं तो ऑटोमेटिकली हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड का काम कर सकते हैं। मतलब हमको अपने माइंड के साथ आर्ग्यूमेंट करना है, किसी और से नहीं आर्ग्यूमेंट करना है। हम लोगों की आर्ग्यूमेंट करने की आदत किस लेवल पे होती है? कॉन्शियस माइंड लेवल पे। मैं आपसे बात कर रही हूं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, कहीं कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया क्योंकि मैं आपकी बात को पसंद नहीं कर रही हूं या उसको गलत महसूस कर रही हूं, तो उसके कारण आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बट वो आर्ग्यूमेंट से नहीं कुछ भी फायदा होगा।
कौन सा आर्ग्यूमेंट करना है, हमको अपने माइंड से बात करनी है कि हमारे माइंड में किस तरह की चीज बैठ गई है, हमको उसको हटाना है, हमको उसको चेंज करना है। और पॉजिटिव बिलीफ को जब हम डाल देंगे उसमें, तो धीरे धीरे आप देखिए किस तरह से माइंड चेंज हो जाएगा और मिरेकल बॉडी पे दिखाई देने लगे। आपकी पूरी बॉडी जो सिकनेस दिखा रही थी, वहीं वो एकदम हेल्दी हो जाएगी, हार्मनी में हो जाएगी, पीस में लगेगी। आपको लगेगा कि मुझ में पूरी तरह से वो पीसफुल एनवायरनमेंट हो गया है पूरी बॉडी में। और जब आप इस तरह से, सिंस देर इज बट वन माइंड, what you feel as true is made manifest in the experience of the patient and a healing follows। किसी भी पेशेंट में ये एक ही माइंड है जो ये हीलिंग प्रोसेस को फॉलो करता है। द एब्सोल्यूट मेथड इज लाइक मॉडर्न अल्ट्रासाउंड थेरेपी। और एक मेथड बताया है हमको यहाँ पर ऑथर ने, एब्सोल्यूट मेथड। इट इज लाइक अल्ट्रासाउंड थेरेपी। आजकल हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं जिस तरह से, और हमको अंदर का, हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि कोई प्रॉब्लम्स है अगर, या कुछ भी जो हमारी बॉडी में हो रहा है, वो सब उसमें पता चल जाता है, उसमें दिखाई देता है। तो उसी तरह से ये काम करता है ये मेथड, जिसको कहते हैं द एब्सोल्यूट मेथड। Many people throughout the world practice this form of prayer treatment with wonderful results. The person using the absolute method mentions the name of the patient, then she silently thinks of God and his qualities and attributes such as God is all bliss, boundless love, infinite intelligence, all powerful, boundless wisdom, absolute harmony, indescribable beauty, and perfection. As she quietly thinks along these lines, her consciousness is lifted into a new spiritual dimension. She feels the infinite ocean of God's love, dissolving everything unlike itself in the mind and body of the patient for whom she is praying. She feels all the power and love of God are now focused on the patient. ये किस तरह से प्रेयर हो रही है कि वो जैसे ही पेशेंट के बारे में कोई किसी को पता चलता है, तो वो उसको बोलना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट दे डू, दे आर डूइंग द प्रेयर फॉर दैट पर्सन विद द पॉजिटिव थॉट्स एंड spirituality level, that is they get connected to the God and then they start doing the prayers. So that way also some of the prayers are done for healing any patient, any person. As she quietly thinks along these lines, her consciousness is lifted into a new spiritual dimensions. She feels the infinite scenes of oceans of God's love, dissolving everything unlike itself in the mind and body of the patient for whom she is praying. She feels all the power and love of God are now focused on the patient. मतलब उसको फील होने लगेगा कि वो पेशेंट किस तरह से ठीक हो रहा है. Whatever is bothersome or vexing is now completely neutralized in the presence of the infinite ocean of life and love. So, this way, the entire scenario of the patient will be total change. It will be totally into love, affection. God's love is being showered on that patient because the person is praying for that patient. तो ये इस तरह से changes होने लग जाते हैं. The absolute method of prayer might be compared to the latest development in ultrasound therapy. These were explained to me recently by a distinguished physician in Los Angeles. The device she uses in her work generates powerful sound waves at extremely high frequencies. When these are focused on the areas of the body where there are abnormal tissues, the affected cells resonate to the ultrasound and respond to it. To the degree that we rise in consciousness by contemplating the qualities and attributes of God, we generate spiritual waves of harmony, health, and peace. Those on whom these waves are focused then resonate to them and respond. Many remarkable healings have been achieved by this technique of prayer. तो ऐसी टेक्निक जो है प्रेयर की, वो बहुत जगह यूज हुई है और बहुत सारे लोग इस तरह से भी ठीक हुए हैं, सिकनेस से बाहर आए हैं, प्रॉब्लम्स से बाहर आए हैं, बिकॉज दिस टेक्निक ऑल्सो वर्क्स. वी कैन प्रे फॉर एनीवन हु इज having any problem regarding the body, and we can connect to that person with harmony, love, peace, when we are connected to our God's that spiritual nature, when we are sitting silently, quietly, and just thinking and telling only the positive words for that patient whom we are trying to save or whom we are trying to get recovered faster.
अ क्रिपल्ड पर्सन वॉक्स, बहुत सारे रिजल्ट्स आए थे, तो उन्हीं रिजल्ट्स को ऑथर ने यहाँ पर भी दिखाया है कि कैसे ये रिजल्ट करता है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है. Dr. Quinby often used the absolute method in the later years of his healing career. One of his manuscripts describes how he healed a crippled woman. He was called on to visit this woman who was lame, aged, and bedridden. कैसे थे ये वुमन? ओल्ड भी थे, एजेड थे, और बेड रिडन थे, चल नहीं सकते थे, वॉज नॉट एबल टू वॉक. He states that her ailment was due to the fact that she was imprisoned by a creed so small and contracted that she could not stand upright and move about. So, when Dr. Quinby has checked that woman, what डॉक्टर सेड कि उनकी माइंड में इस तरह से थॉट्स बैठ गए हैं कि कभी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था जहां उनको एकदम दबा दिया गया था, और उनको उठने नहीं दिया जा रहा था, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, सारे उनके फीलिंग्स जो है वो पूरे इंटैक्ट हो गए, अंदर दब गए. तो उससे क्या हुआ, उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधी नहीं हो पा रही है, इसलिए वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं. शी वॉज लिविंग इन द टर्म ऑफ फियर एंड इग्नोरेंस. उनको बहुत डर है, और उनको पता नहीं है कि ये डर के कारण उनकी हालत कैसे बिगड़ते जा रही है. बिकॉज शी टुक द बाइबल लिटरली, इट फ्राइटेंड हर. इन दिस टर्म, क्विम्बी सेड, was the presence and power of God trying to burst the bands, break through the bonds, and rise from the dead. When the woman would ask others for an explanation of some passage of the Bible, the answer would be a stone. Then she would hunger for the bread of life. Dr. Quinby diagnosed her case as a mind cloudy and stagnated due to excitation and fear caused by the inability to see clearly the meaning of the passage of the Bible that she had been reading. This showed itself in her body by the heavy and sluggish feeling that would terminate as paralysis. As at this point, Quinby asked her what was meant in the Bible verses, "Yet a little while am I with you, and then I go into him that sent me. Ye shall seek me, and shall not find me, and where I am, thither ye cannot come." So what was the problem with that lady? That lady was not able to understand the verses given in Bible. बाइबल में जो भी कुछ बताया जा रहा था वो उसको समझ नहीं पाते थे, और जब भी वो एक्सप्लेनेशन किसी से पूछते थे उस समय पर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, और उस समय पर उनको लगता था कि ये सब क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट गुड, और उनको जो फीलिंग है वो अच्छी नहीं आती थी, और दैट हैज लेड टू पैरालिसिस. उसके कारण उनकी बॉडी में धीरे धीरे जो बॉडी के ऑर्गन्स थे वो काम करना बंद कर रहे थे, और वो पैरालिसिस में चले गए. तो ये जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर क्विनबी को समझ में आ गई, और उन्होंने बोला कि यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद हर माइंड. She replied that it meant Jesus went to heaven. Quinby explained what it really meant by telling her that being with her a little while meant his explanation of her symptoms, feelings, and their causes. He had compassion and sympathy for her momentarily, but he could not remain in the mental state. The next step was to go to him that sent us. So, this Quinby pointed out was the creative power of God in all of us. So, this is the power of God in all of us. Quinby immediately traveled in his mind and contemplated the divine ideal, that is, the vitality, intelligence, harmony, and power of God functioning in the sick person. This is why he said to the woman, "Therefore, where I go, you cannot come." Yes, what he said to the sick person, that wherever I go, you cannot come, because you are not connected to me all the time. So wherever I go, you cannot come. For you are in your narrow, restricted belief, and I am in health. Because I am healthy and you are not healthy, because you are in that belief that I am not healthy, I am not proper, I am having problem. Come out of this thought. This prayer and explanation produced an instantaneous sensation, and a change came over her mind.
तो जब ये प्रेयर के बारे में डॉक्टर क्विनबी उनको समझा रहे थे, उस वुमेन को जिसको पैरालिसिस हो गया था, वो उनके माइंड में कुछ समझ में आने लगा कि यस, बिकॉज ऑफ माई थॉट आई एम सिक, बिकॉज ऑफ माई थॉट आई एम नॉट एबल टू गेट अप, बिकॉज ऑफ माई थॉट आई एम नॉट एबल टू वॉक. She walked without her crutches. Quimby quoted the resurrection of Christ and applied it to her own Christ or health. This produced a powerful effect on her. He also explained to her that the truth that she accepted was the angel or idea that rolled away the stone of fear, ignorance, and superstition. This then released the healing power of God, which made her whole. So, how this made possible that that woman who was paralyzed was able to walk without any crutches. क्रचेस की भी जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये समझ में आ गया कि वो जो सोच रहे थे वो सब किसकी वजह से था? जो ब्लाइंड बिलीफ थी, पहले के सुपरस्टिशंस, इग्नोरेंस, फियर, ये सब के कारण उनके जो ऑर्गन्स थे वो काम नहीं कर पा रहे थे. और अब उनको समझ में आ गया कि यस, वेयर आई एम रॉन्ग, माय माइंड इज ओनली thinking in a wrong way. The pattern is wrong. The thinking pattern has to be changed. The thought pattern has to be changed. So she changed. She started changing that, and see the miracle. She started walking also. So that was the story of a woman who started walking, a crippled person who started walking. Then the next method we have, that is the decree method. पावर गोज इन टू अवर वर्ड अकॉर्डिंग टू द फीलिंग एंड फेथ बिहाइंड इट. कोई भी पावर जब हमें आती है, ये वर्ड्स जो हम बोलते हैं या मैं रोज आपके सामने बोलती हूँ, वो पावर तभी आप महसूस कर सकते हैं जब आपके अंदर वो पावर है. अगर मुझ में वो पॉजिटिविटी नहीं है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू द पॉजिटिविटी. I am feeling that positivity. I am feeling that healthy attitude. I am feeling that positive attitude of my body, organs, tissues, everything is working very nicely and happily. So then only I can make you understand. So these words have got power in it. जो हम बोल रहे हैं उसमें पावर है. Power goes into our word according to the feeling and faith behind it. तो ये word में power कहाँ से आ रहा है? Because I have got that faith. Because I have got that feeling inside me. Then only I can speak those words powerfully. नहीं तो मेरे में भी वो power कम हो जाएगा. I think so. I will. I think something wrong in this statement. I will also be in the doubt. अभी जो मैंने आपको बोला, इसमें कोई पावर नजर आ रही थी, ये वर्ड में कोई पावर नहीं थी. क्यों? क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है. आप जो बोल रहे हो वो सही होगा क्या? वो सोच में जब जैसे ही हमने ऐसे थॉट्स माइंड में डालना शुरू किए, वर्ड्स जो है वो नीचे होते जाएंगे, पावर भी नीचे होते जाएंगे. वो वर्ड्स के पावर नीचे होंगे बिकॉज देयर इज नो फेथ, नो बिलीफ. फेथ एंड बिलीफ होगा तो ही वर्ड्स पे पावर आ जाएगी. When we realize the power that moves the world is moving on our behalf and is backing up our word, our confidence and assurance grow. You do not try to add power to power. There must be no mental striving. There may be There must be no mental striving force or mental wrestling. A young woman used the decree method on a young man who was constantly phoning her, pressing her for dates. She found it very difficult to get rid of him. एक पर्सन जो है वो यंग वुमेन को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, रेगुलरली फोन कॉल कर करके. तो शी वाज वेरी fed up of that person. So how to get rid of that person? When he began to show up at her workplace, she realized that she had to do something drastic at once. Then afterwards, that person started following her at her workplace. So she was getting disturbed by that. She wanted to do something at a very harsh step. So how she did that? Several times a day, she put herself into a quiet state and repeatedly decreed as follows. वो बहुत बार अपने साइलेंस में चले जाते थे and she started following some words. I release JR unto God. He is in his true place at all times. I am free and he is free. She is praying that I am free and he is free. I am free and he is free. So that wherever he is at his own place. So automatically he will not come. He is in his true place at all times. I am free and he is free. I now decree that my words go forth into infinite mind and it brings it to pass. It is so.
I'm telling that my words should go into his mind, and it should give effect to him. According to her, the young man immediately disappeared from her life. See the power of decree method. She started doing this, and she started telling her mind. Automatically, it reaches his mind, and he is also free. She is also free. So this way, the methods it works. She has never seen him since. She says it was as if the ground swallowed him up. ऐसे लगता था जैसे जो जमीन है उसने ही उसको swallow कर लिया. This was the wordings which that young woman told. Thou shalt decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon the ways. This is the words in the Bible. Serve yourself with scientific truth. Always serve yourself with scientific truth. So what we have studied in this, what are the different techniques which we studied, whatever the different techniques we फॉलोड इन दिस. बहुत सारी टेक्निक्स हमको ऑथर ने बताई, और बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक है, बहुत पावरफुल टेक्निक है. द थैंक यू मेथड, द आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड, है ना, the decree method. You can see the effect of the decree method. So many methods are there. We have the absolute method, the affirmative method, the thank you technique, the sleeping technique, the mental movie method. We have the visualization technique, and the passing over technique. So many techniques we studied in this chapter entire. So we will just go through the main summary of the chapter, practical techniques in mental healings. Be a mental engineer and use tried and proven techniques in building a grander and greater life. So be a mental engineer. You have to become a mental engineer and then apply those techniques, whatever is possible in that situation. बहुत सारे टेक्निक्स हमको अभी बताए गए हैं, सब टेक्निक्स नहीं यूज करनी है. जो टेक्निक आपको लगता है कि इट विल बी पावरफुल इन दैट सिचुएशन, यूज दैट. Your desire is your prayer. Picture the fulfillment of your desire now and feel its reality, and you will experience the joy of the answered prayer. Before only just feel the reality that you have already achieved that desire, and then see the miracle happening. Desire to accomplish things the easy way with the sure aid of mental peace, mental science. You can build radiant health, success, and happiness by the thoughts you think in the hidden studio of your mind. Definitely, you can do that. You can build that type of health, success, as well as happiness. Experiment scientifically until you personally prove that there is always a direct response from the infinite intelligence of your subconscious mind to your conscious thinking. Yes, friends, it is always a direct contact with the subconscious mind and the conscious thinking. Whatever we are thinking, whatever we are speaking, that is automatically getting connected to the subconscious mind, and then we are acting. We are realizing. In reality, we are doing that. Feel the joy and restfulness in foreseeing the certain accomplishment of your desire. Any mental picture you have in your mind is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. A mental picture is worth 1,000 words. Yes. Visualize in the mind everything what you desire. So you see that mental picture is representing 1,000 words. Your subconscious will bring to pass any picture held in the mind backed by faith. If you have faith in that picture which you are seeing, you will definitely get that in reality. Avoid all effort or mental concern in prayer. Get into a sleepy, drowsy state and lull yourself to sleep, feeling and knowing that your prayer is answered. You can just speak those words like a lullaby. जैसे लोरी सुनाती है मम्मा सोते समय, वैसे आप फील कर सकते हैं, and you can speak those words. Remember that the thankful heart is always close to the riches of the universe. Yes, thankful heart will always get everything. The one who is very much feeling thank you for everything he or she got. हर चीज के लिए जब हम थैंक यू बोलते जाते हैं, यूनिवर्स लिसन्स टू दैट and gives us all the things which we require and which we desire. To affirm is to state that it is so. And as you maintain this attitude of mind as true, regardless of all evidence to the contrary, you will receive an answer to your prayer. So whatever you are affirming,
If you think that it should happen so by your subconscious mind, then definitely it will happen in your life. Generate waves of harmony, health, and peace by thinking of the love and the glory of God. What you decree and feel as true will come to pass. Decree harmony, health, peace, and abundance. Always think that you are in harmony, peace, and abundance. See the difference, friends. Start feeling positive. Start seeing all those pictures in your mind that you want to achieve, that you want to get. whatever you have thought of in the past, you are now having it. जो भी आज आपके पास है, वो सब आपने कभी ना कभी देखा था, सोचा था अपनी लाइफ में, वहां तक आप पहुंच चुके हैं. अब आप आगे की सोचना चाहते हैं, अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी, पीसफुल, विद हार्मनी ऐसा रखना चाहते हैं अपने आप को. सारी जो पॉजिटिव चीजें वो आप में होनी चाहिए. यू शुड हैव सेटिस्फैक्शन ऑफ वॉट एवर यू आर हैविंग. तो एवरीथिंग वॉट एवर यू आर seeing in your mind, visualizing in your mind what is coming in near future, that will come to you in reality. Friends, this is really true. Try it. Follow any method of see my recordings again and again and see different methods which I have discussed. बहुत सारे मेथड्स मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने माइंड में और उस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं. आप अपने वर्ड्स, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखिए कि आपको क्या चाहिए है, उसके हिसाब से आप उसको कंटिन्यूअसली बोलते रहिए. रात को भी सोने से पहले, जब आप स्लीपी ड्राउजी स्टेज में है, और सुबह उठते बराबर, उठने के बाद इमीडिएटली जब आपका माइंड जो है अल्फा स्टेज में है. तो जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, आप देखिए कि आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगते हैं और आप ये सोच सकते हैं कि यस, आई एम perfectly all right with all the things in my life. Whatever I wanted, I got it. So this is the way how we can change our life, and we can change by only changing our thought pattern. खाली अपने थॉट पैटर्न चेंज किया, आप देखिए लाइफ चेंज हो जाती है और आपको हर वो चीज मिल जाएगी जो आपको चाहिए. तो फ्रेंड्स, आप अगर ये सुन रहे हैं तो आप जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो दुनिया में बहुत ऊपर है. सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि आप उसको पहचान नहीं सकते कि आपके पास है वो सबकॉन्शियस माइंड. मेरे पास भी है, वो मेरा माइंड है. आपके पास है, वो आपका माइंड है. तो you do it, friends. This is very, very important to do it practically, feel it and observe it. Definitely, if you like my videos, please subscribe it and share it with your friends. क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं. कहीं उनको ये सुनने के बाद कुछ टेक्निक्स ऐसी पता चल सकती हैं जहां उनकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाऊंगी और आपको भी उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी. तो आप ये शेयर भी कर सकते हैं. Please like, subscribe and share my videos if you like it. Thank you, thank you, thank you for listening.